हम सारे लोग फायरिंग में फंसे हुए हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, फायरिंग में फंसे हुए हैं हम लोग। पले बड़े जो इस ज़मीन पे हम जवान हुए, ये ना पूछो हमारे कैसे इम्तिहान हुए। It has been working like on razor's edge. I mean, I have myself survived 4-5 assassination attempts. Not that I would receive a parcel bomb, but I was knowing that I will be killed. I literally faced a kind of a threat, a pressure. This was अजीब कैफे था बस मतलब शायद ही ऐसा लाइफ इन एंड बस वाट वाट कलमा पढ़ान मतलब शायद ये लास्ट 2-3 सेकंड ही तो मैं लाइक कलमा पढ़ें मतलब मैं तो तंग खुदा याद सोचता था कि मैं अब मर ही जाऊं, मतलब इतना देखा था मैंने, 4 ऑपरेशन आ गए वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि कभी भी किसी भी वक्त मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। As you know that the journalism is being called the profession of adventure, but I think that especially in the conflict zone, this does not, turn out to be true, in the sense that when you go in the field, when you work in the field, and when you face the challenges, the real challenges, then it certainly is something different that what you hear about journalism and what you might have been talking about it, thinking about it. Of course, it has been very difficult to report from Kashmir on Kashmir, particularly during the initial period of militancy, and you had 2 main guns, and both wanted you to toe their line, which was not possible. And then after some time, a 3rd gun came in, that was of the renegades, of so-called counterinsurgents. So yes, it was very difficult to report, on Kashmir objectively. 95-96 वो दौर था जबकि सारे मीडिया पे, न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बल्कि जो हमारा प्रिंट मीडिया भी है उस पे काफ़ी सारा दबाव था, एक तरफ से नहीं बल्कि हर एक तरफ से दबाव था. It was challenging at that time because working environment, we were working in very hostile environment because at that time the militancy was on its peak. In fact, we have lost about 12 people, and my friend and colleague Mushtaq Ali was also killed, and that because of me in the sense that the parcel bomb which was sent to us by army through renegades. Receive kur me parcel. So lady आई मैं निश्चित ना मुझसे parcel देनी. पता है इस तरह अंदर कहीं cool से तो तब मुश्ताक साहब जिस पर था दोनों को खोल. कैसे curiosity साइड नहीं खबर क्या शायद मज़ तो यूँ ही cool तो support. But I was not knowing that someone else will be killed. I mean, Mushtaq Ali. That was most unfortunate part of it because he was not involved in the sense that he had nothing to do with what I was doing, right or wrong. It was very, very sad. In fact, we had been together just, I think 2 hours before that. We were at a wedding and we had food together in Magarmal Bagh, and he came here, he opened that packet and his body was blown into pieces. Fortunately, myself and another colleague, Habibullah Nakash, we got injured, but somehow we survived that attack. I mean, the words cannot express that kind of trauma and that kind of setback with which we
have been living on account of his death. Actually, when that incident occurred, I had been just married, and you can imagine, and my wife was very, not only shocked, she was, she just wanted me to leave this profession and do something else. But I then explained to her, and after she had that idea what I am doing and then I'm supposed to face, then she said, all right, it's your decision and it's your life. Yes, of course. When I left BBC, or I was forced to leave BBC, I started. I was already working for Asian Age newspaper, and Asian Age is a small newspaper, and not many people read this newspaper in Kashmir. For me, nothing changed. And for a journalist and for a professional journalist, I don't think his job or his work changes with the change of the newspaper or media organization he or she works for. So professionally, nothing changed for me. I think the journey in Kashmir has been very critical for me as well as for other colleagues who have been in the field, notwithstanding the fact that there has been some kind of respite during the past few years when the violence level has gone down and the
dynamics of the whole violence and the militancy as such has changed to a greater extent. The players have changed and the priorities of the players have changed. So I think in that sense, yes, we have been getting a respite for last few years. But nevertheless, I think that the pressures, invisible pressures continue to be there. And even if there are not pressures, but you think within your own self that maybe if I do this, maybe it creates problem and it hurts one section and it may be pleasing the other section. Reporting from Kashmir, especially the live reporting, when we come to live reporting, it is very difficult because everything, whatever you say, every word counts, every word is being analyzed by various agencies, it is being monitored, and even people are conducting research and why this person said this word so many times in his report, in his live chat. I was the first reporter and my team who have had the interview of the family of Rahman Padru. When this whole issue came to us and we interviewed his family, we came to know that this guy is a civilian, he's a carpenter. He was killed in the custody by police and was dubbed later on as foreign militant. Then I talked to the government agencies like police department and other agencies, concerned agencies. There were certain pressures, some officers directly called me up, said that, don't air this news. मेरा जो पूरा क्रू था, मेरी पूरी टीम जो थी वो एनकाउंटर के बीच में फंस गई और आप अंदाज़ा लगाइए कि विदाउट एनी ब्रेक 3 घंटे मुझे एक्सटेम्पोर टेलीविज़न पे बोलना पड़ा और इन 3 घंटों में मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्योंकि ऐसे भी बोलना है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, तो बहुत ही होशियारी से, समझदारी से बोलना पड़ता है और एक तरफ से आपको अपनी जान भी बचानी है, एक तरफ से आपके क्रू की जान बचानी है और दूसरी तरफ आपको ये भी ख्याल रखना है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए और ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आपने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया या ज़्यादा सच बोल दिया, मैं सच बात तो सच, ज़्यादा सच बोल दिया तो कल को कोई आपके ऑफिस में आ जाएगा। जल्दी से थ्रो कर दो यार, जल्दी से यार। हमीद गाइड मस बस कौन हमीद, अरे ओ भी यार छोड़ो ना, हम सारे जमीन पे लेटे हुए हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि हम भी यहाँ पे गोलीबारी में फंसे हुए हैं और ये जो एरिया है डलगेट का सुलेमान कॉम्प्लेक्स है और जो ही हम यहाँ पे पहले से ही कुछ गोलीबारी चल रही थी और जो ही हम यहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद आप जैसा देख सकते हैं पूरे इस इलाके में गोलीबारी चल रही है, जहाँ पे कुछ ही देर बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री को गुजरना है और तो कैसे ये गोलीबारी किस तरह ये जो मिलिटेंट है यहाँ पे इस एरिया में पहुँचे। Our camera was caught in a crossfire. We left our camera there. We moved back around 10-15 yards. Then came the gypsy. We thought that okay, it's over now. Then one of the cop tried to take our camera out, and we tried to follow him. And then we tried to get into the gypsy, which was bulletproof bunker. By the time we went to open, they fired indiscriminately. I don't know who. पेट्रोल है। बुलेट आव में बस वस तम पे मे थोड़ा होश अथी सती तो मे वो खून बे इंटेस्टाइन नबर तम पे टीवी कैमरा मैन शबीर अहमद तम तुलस बह तो नुनस SMH हॉस्पिटल यम सब जिप्सी मज मतलब इंसिडेंट पे यम सब नुहस हॉस्पिटल इंटेस्टाइन सारी नबर तो मगर तम गो मैं शायद बचने वन कह वत सोचान बस वत कलमा पारान मतलब शायद यह लास्ट 2-3 सेकंड तो मे लग कलमा पारन मतलब मे तम खुदा याद
पत्तः चुनस बह ऑपरेशन थिएटरस में तम पे पूरा पाई कह ये सब सुबह कोर्स बह शिफ्ट अपोलो हॉस्पिटल पे 2-3 दिन लग मे पाई कि मे राइट किडनी रिमूव हालांकि मैं वो कंसे राइट मतलब किडनी डैमेजड तो इन मे पे पे डॉक्यूमेंट्स वो पे हॉस्पिटल तम रिकॉर्ड तथ पे लिखित कि राइट किडनी रिमूव तो मैं वो वन तक कंसे मे पोर पान तम रिकॉर्डन मज इत तम सब मे वारिया मुश्किल गो तम सात इत दिन हम ऑफिस में बैठे थे तो एक ग्रेनेड हो गया इधर SBI के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ग्रेनेड हुआ। हम पहुंचे वहाँ पे, स्पॉट पे गए तो देखा कि कुछ ग्रेनेड हुआ है कि किसी को लगा, कोई कैजुअलिटी, कोई इंजरी नहीं है वहाँ पे। तो सडनली वहाँ पे एक गाड़ी पार्क की थी, JK बैंक की गाड़ी। हमें वो पुलिस वाले उसकी फ्रिस्किंग कर रहे थे। हमें लगा कि ये JK बैंक पास में ही है, ये तो JK बैंक की गाड़ी होगी। मगर किसी को दिमाग में ये नहीं था कि इस गाड़ी में IED रखा है मिलिटेंट्स ने। तो जो ही हम शूट कर रहे थे तो सडनली एक ब्लास्ट हो गया। जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स का एक फोटोग्राफर ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी और बाकी जर्नलिस्ट्स थे बहुत सारे, उनमें जख्मी हो गए। उनमें से मैं सीरियस जख्मी था। अख वाक़ा युथी सह अत बादम बागस मज फंसे त्रे जर्नलिस्ट तत तम विज तस्यो मतलब बेसिकली तम दो कैमरा मैन ANI कैमरामैन तारिक साहब तमिस तत परमिशन लेटर रटन, तमिस कोतान गसन मतलब बॉर्डर एरियास कवर करने तो अस गई तमसी कंपनी दिन तमिस सौर अख बह ये NDTV फयाज कैमरामैन सह तो यूं तोत वत मतलब वन नबर कन तो यह पान अंदर आमुत तारिक साहब, यह नबर कन थी तो अथ मज गो नबर कन ग्रेनेड ब्रॉडवे सिनेमास नश तो मज गो कह टाइम अत गई फायरिंग कि मतलब ये तो मतलब सेफ जाए कहीं तो अथी अंदर कन अथ मज द्राव मेजर पुरुषोत्तम और भाई आप बाहर क्यों उठे, आओ काफ़ी पी लो। नहीं बाहर कुछ हो गया, अब जल्दी है जाएंगे वापस। तो नहीं ये कुछ नहीं, ये पटाखे होते रहते, दिवाली है तो अस तस्ो शायद दिवाली। तो मज गो कह टाइम तो अम कमरस मज बिहत तो अत गई आंगनस मज नबर की फायरिंग तो अत आव अम डिप्टी मेजर शर्मा तमिस नाव, सह पे दरवाज तल तो पे वो यह सिलसिल चेर मतलब इस कल एंड रोड चलान 9 तम 9 बजे मतलब पे थे मे बाथरूमस मज बंद पुरुषोत्तमन 3 नफर बे आर्मी हुंद अख लड़क कह टाइम गो तो पे वो पुरुषोत्तम तम मोरमुत पे यह बसान मतलब शायद अम पे शायद मतलब सह अजीब कैफियत मतलब बसो मतलब शायद यह लाइफ इन एंड तो पे नबर खड़े पे नबर कन सेव खस मे बसान 12 कि 1 बजे तम थे नबर कन यह उल्ट अत तो तथ दौरान पे थोड़ा रूद त मतलब थोड़ा थोड़ा कुलन पन पेवान मे पे कैंस टाइमस निंदर तथ दौरान तो मे बो शायद मलक मोत यी आसान तो अथ मज गो मज प्यूंत खन तो आव कुछ तार अमिस मे पत किन यह थप तुलनस तुद तो पे बो पे निक क्वेश्चनिंग वश्चनिंग खत पे बो ना वन जिंदगी।
Ni